Well, hello students. I hope you all are good. So today we are going to start a new topic, that is transportation. This is the third life process of your chapter number 1, that is life processes. Okay. So just to recap the things, uh, the first chapter life processes include 4 processes. The first one was nutrition. The second one was respiration, third is transportation, and fourth is excretion, right? So out of these, we have already covered the first 2, that is nutrition and respiration. From this video lecture onwards, we are going to cover the third life process, that is transportation. Okay. Now the very first question is, what is transportation and why it is necessary, and how it operates, correct? Okay. So everybody knows that transportation is the process of transferring things from one place to another place, है ना बेटा? मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना या ट्रांसफर करने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, करेक्ट? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कॉमनली जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो या तो बाई रेल होता है, या फिर बाई रोडवेज होते हैं, या फिर बाई वाटरवेज होते हैं, करेक्ट? हम लोग ट्रक्स में, ट्रेन्स में, शिप्स में, एरोप्लेन्स में भर करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट? ट्रांसपोर्ट हम क्यों करते हैं? क्योंकि सामान का प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और उसका यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है। तो जहां पे बन रहा है वहां से उसके यूटिलाइजेशन साइट तक आपको क्या करना है? उसे कैरी करना है, उसको वहां तक आपको ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इन आवर बॉडी, है ना, स्पेशली आवर बॉडी एज इन द बॉडी ऑफ complex organisms, complex animals or higher plants, क्या होता है? which are multicellular, बहुत सारे सेल्स हैं और हर एक सेल को कुछ जरूरी चीज चाहिए होती है। ओके, तो कुछ यूजफुल चीजें उन्हें चाहिए, एट द सेम टाइम वो कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको वहां से रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इन सब के लिए जो भी आपके एडवांस्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। ओके, सिस्टम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, लेकिन वहां पे सिस्टम नहीं है, मतलब क्योंकि वहां पे बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म से काम हो जाता है। ओके, ग्रेट। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग यूजफुल और हार्मफुल materials from one place to another, करेक्ट? इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, कैरी करने को। ग्रेट। सेकेंड क्वेश्चन था कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का होता है। ओके, सो यूजुअली देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? वी आर नॉट स्पीकिंग ऑफ द फिजिकल ट्रांसपोर्ट जो कि ट्रक्स और ट्रेन्स में होता है, नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यूजुअली जो भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किस चीज का होता है? यूजुअली रेस्पिरेटरी गैसेस का, करेक्ट? किसका? नंबर 1, रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस एज इन O2 एंड CO2। या फिर दूसरे किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है? न्यूट्रिएंट्स। ओके, nutrients such as glucose, amino acids, okay, या फिर other building blocks, useful materials, okay, other useful materials such as vitamins and minerals, okay। इसके अलावा किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है? इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट होगा वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज योर यूरिया या फिर यूरिक एसिड या फिर अमोनिया।
ओके, इन सब का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, ये सब जो है यूरिया, यूरिक एसिड या अमाइनो अमोनिया, दिस ऑल आर नाइट्रोजनस वेस्ट। ये सब क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्योंकि ये सब किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से। ओके, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, दिस ऑल आर नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हर एक सेल प्रोड्यूस करता है। देखिए, जब आप अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं, ओके, तो उससे आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज नाइट्रोजनस वेस्ट। और बाद में ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जो लीवर है वो उसको कन्वर्ट कर देता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन स्टिल जस्ट फॉर योर नॉलेज लेट मी टेल यू कि अमाइनो एसिड्स जिनसे कि प्रोटीन बना होता है, इनका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो आपके अमाइनो एसिड से बाद में बनेंगे अमोनिया। ओके, जब इनको हमें बॉडी से निकालना होगा, ठीक है, जब इनका कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे बनेगा अमोनिया। और ये अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसीलिए कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं आइदर यूरिया में, या फिर कुछ एक ऑर्गेनिज्म इसको कन्वर्ट कर देते हैं इन द यूरिक एसिड। ओके, और फाइनली यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया जो है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इन दिस चैप्टर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया हो सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे द ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रोड्यूस अमोनिया एज अ excretory product or waste product, we call them ammonotelic. Those who produce urea, ureotelic, and those who produce uric acid, uricotelic. है ना, ये सब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। So what we are seeing here is जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी में, ये मेनली किन चीजों का हो रहा है, रेस्पिरेटरी गैसेस का, such as O2 and CO2, nutrients such as glucose, amino acids and nucleotides, fatty acid, things like that. Okay, या फिर other useful materials such as vitamins, minerals. Okay, इसके साथ कुछ और आप ऐड कर लीजिए, मुझे याद आ गया है, such as hormones. Okay, hormones का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर एंटीबॉडी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, इम्यूनिटी में काम करता है। सो एंटीबॉडीज, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है ओके बॉडी में। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, दैट कुड बी यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी मल्टी सेलुलर एडवांस ऑर्गेनिज्म में। इट कुड बी प्लांट और इट कुड बी एनिमल। समझ में आ रहा है? और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है ये करता कौन है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। और प्लांट्स और एनिमल में कैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके, व्हाट इज द मैकेनिज्म। ग्रेट, so far we have answered two questions. First one, what is transportation, and second one, which things are transported in living organisms. Great. चलिए थर्ड चीज हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, राइट, कौन करता है। अब देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में अलग अलग तरीके का होता है बेटा। ओके, सो इट इज डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में यूजुअली द ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय ब्लड, इज यूजुअली डन बाय ब्लड, है ना। मैं यूजुअली बोल रहा हूं क्योंकि किसी किसी एनिमल में आपका ब्लड के जगह इट कुड बी दी पैरेन्काइमल टिश्यू, ओके, और सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है, ब्लड, दैट इज डन बाय ब्लड, ओके।
Whereas अगर हम plants में देखें, plants में the kind of transportation is totally different from animals. There is no blood. No. In plants, the transportation is done by two complex permanent tissue called xylem and phloem. ठीक है? So यहाँ पे transportation कौन कर रहा है? Xylem and phloem, and we have already studied this in our previous classes that xylem से आपका water and minerals का transportation होता है and phloem से food and hormones का. Correct? So can you see the overall idea of transportation is drastically different in plants and animals. Okay? आपके NCERT या आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ इन्हीं दोनों का पढ़ना है, लेकिन एक और peculiar बात हम यहाँ पे करेंगे, right? And that is the transportation in unicellular organisms. In unicellular organisms. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, राइट? द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, राइट? अब एक सेल में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है क्या? सबसे पहले आप तो ये बोलोगे, बट इट इज, देयर इज. व्हाई? लुक एट दिस. सपोज दिस इज वन सेल. Okay, this is one cell and this is its nucleus, and this single cell is in itself an organism. यानी कि ये क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया. और सपोज कीजिए कि यहाँ पे फूड आया. दिस ब्लू थिंग इज फूड. ग्रेट. दिस ब्लू थिंग इज फूड and the remaining white is the cytoplasm. Well, now the food is present in one specific area of the cytoplasm. अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ उसी एरिया में फूड की जरूरत होगी एंड रिमेनिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म में जो भी बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको फूड की जरूरत नहीं होगी. ऐसा तो नहीं है. दे रिक्वायर, सो फूड का होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विद इन द साइटोप्लाज्म. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या हम इसको कह सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. क्योंकि नाउ दिस फूड हैज टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस टू दिस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल और द ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब ये होगा कैसे, राइट? यानी कि ये होने के लिए देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग. दैट इज दिस blue food which is present at one location should be mixed throughout into the cytoplasm and that will be a kind of transportation here. और यहाँ पे मिक्सिंग होती भी है. कैसे होती है वो देखिए. यहाँ पे मिक्सिंग होती है बिकॉज ऑफ साइक्लोसिस. अब साइक्लोसिस क्या है? आपका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो साइटोप्लाज्म है इट इज नॉट स्टैग्नेंट. ओके, रादर इट कीप्स ऑन मूविंग. ओके, इट कीप्स ऑन मूविंग. और कैसे मूव करता है ये? इट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन. ओके, तो ये जो आपका साइटोप्लाज्म है इट इज मिक्सिंग. इट इज मिक्सिंग ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर मूवमेंट इन दिस साइटोप्लाज्म. और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं, या इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लोसिस. क्या कहते हैं? साइक्लोसिस. सो बिकॉज ऑफ साइक्लोसिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आपका जो भी यूजफुल या हार्मफुल चीजें हैं उनकी क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है विद इन देयर साइटोप्लाज्म. ओके, या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉपर मिक्सिंग होती है, जिसको कि हम एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ओके, ग्रेट. सो आपने देखा कि प्लांट्स में बिल्कुल अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है. इट इज बीइंग कैरिड आउट बाय जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, वेयर these are distinct. The xylem is for water and minerals, but phloem is for food and hormones. Great. Whereas in animals there is this single tissue called blood, जो कि पानी की तरह है. It is fluidic and it carries the materials, okay, to be transported along with it, और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है. एंड थर्डली हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जहां पे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस. ओके, चलिए, तो हम लोग आज जो है वो स्टार्ट करेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. ओके, लेट्स सी. अब देखो बेटा,
अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की, so in animals the transportation is done by blood, okay, और आपने पहले यानी कि क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है that blood is a fluid connective tissue, right? Blood is a fluid connective tissue, okay, and this fluid connective tissue is made up of two things. Number one is blood plasma, which is the fluidic part, okay, and second it is made up of blood cells, which are also known as corpuscles, okay, and these blood cells or corpuscles were of three types. Remember, RBC, WBC and platelet. याद आ रहा है? RBC, WBC and platelets, correct? All of you, those do not remember the complete blood tissue, I would request please go and revise your class 9th notes or do read it from the class 9th book, okay? It is important, ठीक है? ब्लड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, okay? So blood is a fluid connective tissue, या फिर हम इसको बोलते हैं loose connective tissue, correct? और ये बना होता है दो चीजों का. Number one is the fluidic part, that is made up of blood plasma, okay, and the blood plasma forms around 55% of the blood tissue, and remaining 45% is formed by the blood cells or corpuscles, and these are of three types, that is RBC, red blood cell, WBC, white blood cell, and platelets. याद आ रहा? जिसमें कि सबसे अधिक कौन था? RBC. सबसे कम कौन सा था? WBC. Okay, now here is a question for all of you. Please go and find out the number of each blood cell in per 100 ml of human blood. Okay, so basically I want to know what is the number of RBC found in 100 ml of human blood, what is the number of WBC in 100 ml of human blood, and what is the number of platelets. Okay, so this is task for all of you. Go and do this homework. Great. And while you are doing this homework, also do that what is the function of each one of them. Okay, what is the function of each one of them, that is what is the function of RBC, WBC and the platelet. So it is a homework for all of you. Great. Now we know that transportation has to occur for the following items, that is nutrients, useful materials, respiratory gases and the waste products. We know it, right? Apart from this, blood also helps in the transportation of drugs, okay? So whatever drugs or medicines you eat finally gets distributed throughout your body through the blood, okay? Great. Now we know that these things has to be transported, that is first one was respiratory gases, and when we are talking of respiratory gases, we are basically talking of O2 and CO2. Let me tell you that O2 is mainly transported by the RBC, while CO2 is mainly transported by plasma. Okay, बेटा ये चीज मैंने emphasize की थी even in the previous classes, right? Previous video lectures में हम लोगों ने इसकी बात की थी जब हम लोग conclude कर रहे थे respiration, तो वहां पे हमने बात किया था कि ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, करेक्ट? मैंने
एग्जैक्ट बाइफर्केशन भी आपको बताया है कि कितना परसेंट आरबीसी में होता है, कितना परसेंट प्लाज्मा में होता है फॉर O2, CO2 के लिए कितना परसेंट प्लाज्मा करता है और कितना परसेंट हीमोग्लोबिन करता है. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन ऑफ. ठीक है, इफ यू रिमेंबर, वेरी गुड. इफ यू डू नॉट, काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो और गो थ्रू योर बुक्स. ओके, लेकिन ये सब आप याद रखेंगे. सो रेस्पिरेटरी गैसेस जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? O2 का मेनली ट्रांसपोर्ट होता है बाय द RBCs, while CO2 का मेनली किससे होगा? थ्रू प्लाज्मा. ग्रेट. नाउ इफ वी आर टॉकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, या फिर हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स की, और वी आर टॉकिंग ऑफ विटामिन्स, और वी आर टॉकिंग ऑफ एंटीबॉडीज, ओके, और वी आर टॉकिंग ऑफ मिनरल्स, these all are transported by plasma, blood plasma. Okay, great. Now we know that apart from this, blood is also responsible for the transportation of waste materials, right? Waste materials such as urea, uric acid or ammonia, and these all are collectively called nitrogenous waste. Correct. Now all these nitrogenous waste are transported through plasma. So can you see, the plasma is doing most of the transportation. So all the things that are transported through blood except O2, rest everything is mainly transported by the blood plasma. Okay, and how they get transported through blood plasma? Mainly in their dissolved form. तो आपका जो यूरिया है या यूरिक एसिड है या फिर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, विटामिन है, एंटीबॉडीज है, मिनरल्स हैं, ये सब क्या होते हैं? जो ब्लड प्लाज्मा का वाटर है उसमें, या ब्लड प्लाज्मा जो फ्लूइड है उसमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट? एंड देन दिस फ्लोज विथ द ब्लड एंड रीचेस ईच एंड एवरी सेल, और फिर सेल्स में ये ब्लड में से निकल करके सेल के अंदर चले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड. ओके, ग्रेट. आइदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड और अंडर द एक्शन ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन occurs in your body. Now when we are talking of oxygen, now oxygen is very important. ठीक है, जो O2 transport है, it is very important. Why? Because if oxygen transport is not appropriate even for a few minutes, it is detrimental. मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है. इंसान को अगर कुछ मिनट्स तक आप सांस नहीं दो, मतलब obviously for a prolonged time, he or she will what? Die. So oxygen transport बहुत crucial है ना? और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेनली कैसे होता है? Remember I told you that 97% of O2 is transported in the form of oxyhemoglobin, right? In the form of oxyhemoglobin, जिसको हम HBO भी लिख सकते हैं. Okay, oxyhemoglobin, and this hemoglobin is found inside the RBC. Correct? So 97% of oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin. Okay, through the RBC. Correct? Remaining 3% कैसे होता है बेटा? Remaining 3% of O2 is transported as dissolved oxygen, dissolved O2 in blood plasma. Okay, so can you see? So most of the oxygen is transported through the hemoglobin. यानी कि hemoglobin is very essential for the oxygen transport. Correct? Now, if a person has more hemoglobin, it means he can carry more oxygen, and if there is more oxygen, there will be more cellular respiration, and if there is more cellular respiration, there will be more production of ATP, energy, and if there is more energy, the person will be more energetic, he can do more work, he will be more powerful, isn't it? Great. So oxygen transport is very necessary, okay, and oxygen transport is directly related to the energy
production. Correct? Now, let us look at the hemoglobin content in different organisms, okay, and in different age groups and in different sex. ठीक है, देखो जो हीमोग्लोबिन है, HB is for hemoglobin, okay. So hemoglobin is found in blood and it is responsible for oxygen transport, and the amount of hemoglobin is actually determining the amount of oxygen transport, right? So how much is this hemoglobin present in our blood? Let us look. So I am taking here adult, okay, or not adult. Let's first see, compare between the age groups. अगर हम humans की बात करते हैं, okay, humans की, so this hemoglobin in a human child is approximately 10 to 15 grams per deciliter, but this is on the higher end. Usually the average value for child comes as around 11 grams per deciliter of blood, okay. So 11 gram per deciliter of blood is the average amount of hemoglobin in a human child, okay. समझ में आ रहा आपको? 11 grams per deciliter, and 1 deciliter is equals to 100 milliliter. Okay, great. Now, if we consider adults, adults have something around 10 to 17 grams per deciliter. So can you see the amount of hemoglobin is higher in adults and lower in child or children? Okay. Now within adults, so if we are talking of adult human, so within adult humans, if we consider male and female on the basis of sex, the amount of hemoglobin varies. So in male, the average amount is 15 grams per deciliter, okay, while in female the average value is around 13.5 grams per deciliter, okay. So adult healthy human male has around 15 grams of hemoglobin in 100 ml of blood, correct, while female have 13.5 grams per deciliter. Now here is a question for you all. Question: if a normal adult human male have 5,000 ml, or that is 5 liters of blood, calculate the total amount of hemoglobin. ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक एडल्ट ह्यूमन मेल में अप्रोक्सीमेटली टोटल कितना ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है. Well students, unfortunately the electricity, there is a power cut in my area, so we are concluding this chapter here. In next video lecture we will continue from this place, and we will keep on studying more about the transportation in animals. Okay, so please take very good care of yourself. See you in the next video. Stay tuned. Thank you.